Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Kamal Saxena and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं देश के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर SP शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं कमल सक्सेना। Domestic stocks gain more than 1%. Sensex closes above 55,400 points. Nifty settles near 16,600. Rupee appreciates 26 paise against the US dollar and Brent crude prices hover around $116 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज, प्रमुख सूचकांक 1% से अधिक बढ़त में रहे। सेंसेक्स 55,400 के ऊपर बंद हुआ, निफ्टी 16,600 के नजदीक आया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया हुआ 26 पैसे मजबूत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $116 प्रति बैरल के आसपास बनी रही। घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगभग 1.5% बढ़त में रहे। सेंसेक्स 55,400 के ऊपर पहुंच गया और निफ्टी 16,600 के नजदीक बंद हुआ। एशियाई बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू बाजार में भी लिवाली की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 870 अंक यानी 1.5% उछलकर 55,464 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 250 अंक यानी 1.53% की बढ़त लेकर 16,595 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजारों की ओर चलें तो छोटी और मझौली कंपनियों की शेयरों की लिवाली भी तेज रही, हालांकि इनका प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में थोड़ा कमजोर रहा। BSE मिड कैप इंडेक्स 1.06% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.18% की वृद्धि हुई। At the stock markets, the Sensex and the Nifty today climbed 1.5%. Both stocks jumped amid gains in other Asian share markets. The BSE Sensex closed above 55,400 points, while the NSE Nifty was ended near 16,600 level. The Sensex rose 817 points or 1.5% to trade at 55,464. The Nifty also gained 250 points or 1.5% to trade at 16,595. In the broader market, at the BSE, the mid-cap climbed 1.1% and the small-cap index surged 1.2%. In the Sensex pack, 27 companies logged gains, while 3 witnessed losses. Hindustan Unilever was the top gainer as it rose 5.2%, followed by Tata Steel, which added 4.3%. SBI gained 3.7% and Axis Bank climbed 3%. But Tech Mahindra slipped 1.3%, Dr. Reddy's Lab declined 0.8% and TCS fell 0.4%. In sectoral indices at BSE, all 19 indices gained. FMCG gained the most as it rose 2.7% and the Realty gained 2.2%. Metal, BankX and Basic Material Index appreciated 2% each. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,423 companies gained while 941 fell. Shares of 96 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज $1 की तुलना में रुपया 26 पैसे मजबूत हुआ, 76 रुपए 31 पैसे पर बंद हुआ।
दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.27% की बढ़त लेकर 98.24 पर पहुंच गया। डॉक्टर शर्मा, बाजार में आज की तेजी के पीछे मुख्य कारण क्या सब नजर आ रहा है? आपको चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है बाजार में। देखिए, जो इसके पीछे मेरे को 3 बड़े कारण नजर आ रहे हैं। एक तो सबसे पहले जो यूक्रेन और रशिया में जो डायलॉग चालू है, जिसकी बहुत जल्द ही कुछ उम्मीद है कि कुछ सोल्यूशन निकलेगा। तो जो एक ऐसा अंदेशा था कि वॉर शायद और डीपर जा सकती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा भी पॉजिटिविटी आनी शुरू हुई है कि शायद कुछ डायलॉग सेट हो और दोनों कंट्री एक पीस टॉक्स में सामने आए। तो जिसकी वजह से मार्केट ने पिछले 2-3 दिन से काफी अच्छे से इसको पॉजिटिवली लिया है और मार्केट्स में काफी जोरदार शॉर्ट आई है, रिबाउंड हुआ है जबरदस्त। जो पहले शॉर्ट सेलिंग में हर रोज मार्केट एक गिरावट देख रही थी, तो आज वो वापस पिछले 2-3 दिन से रिकवर हुए हैं। तो ये एक कारण है। और दूसरा जो डोमेस्टिक फ्रंट पे हम देखते हैं कि क्रूड प्राइसेस का जो एक मेजर इम्पैक्ट रहता है, इन्फ्लेशन को स्टोक करता है, और दूसरा ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है जो इम्पैक्ट होता है। तो क्रूड में थोड़ा गिरावट आने की वजह से मार्केट्स ने उसको भी पॉजिटिवली लिया है, जिसकी वजह से रूपी के ऊपर एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है और रूपी एक अच्छी सिग्निफिकेंट से इम्प्रूवमेंट हुआ है। तीसरा कारण है कि जो डोमेस्टिक फ्रंट पे जैसे इलेक्शंस के रिजल्ट पहले कुछ ऐसा था कि शायद कहीं पे भी फुल मेजोरिटी के साथ वापस जो सत्ताधारी पार्टी है वो नहीं आएगी या कुछ ऐसे हो सकता है, लेकिन अभी ये क्लियर हो गया है कि जो रूलिंग पार्टी है वो वापस रिपीट कर रही है ज्यादातर से, और जो पॉलिसी एनवायरनमेंट है वो इंटैक्ट रहेगा, जो एक मार्केट्स के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, जिसकी वजह से मार्केट्स ने उसको भी आगे फैक्टर इन किया है और मार्केट्स में अच्छी बढ़त दिखाई है। तो ये मेजर कारण है। लेकिन मार्केट का जो ओवरऑल सिनेरियो है वो अभी भी वॉलेटाइल रहेगा, क्योंकि जब तक एक कंक्रीट टॉक यूक्रेन और रशिया में नहीं होती, जब तक एक टॉक नहीं होती, तब तक मार्केट्स बहुत ही वॉलेटाइल रहे। So, Sharma ji, I want to ask how, like you said, that this is going to be a volatile next few days. Do you think this rally is sustainable? Because it has already, like Sensex has already gained 1800 points, Nifty has gained 500 points. So, how durable is it likely to be in the long run? Say 2 weeks time or something like 1 month. In the 2 weeks time or 1 month, I would say markets will be extremely volatile because there are a lot of news emerging from the various parts of the world, like Russia, Ukraine, and now Fed decision is also on the cards. How the Fed will move for the tapering of the stimulus process, or they will provide some more relief to the economy, considering the already geopolitical development. So all these developments will matter, and markets will be on the basis of such developments, and volatility will remain for the weeks, because markets are running on news base, but there is no concrete solution of anything. So if some news comes positive, then the markets take it positive and they move forward and make the new strong highs. But sometimes if the negative news comes, then the markets decelerate significantly and the free fall is observed. So in this juncture, I believe there is no clear-cut direction for the markets at this juncture, and markets are not that much strong at this point also, because markets recovered significantly during the last 3-4 days. So that's why I believe the investors would like to book their profits at this juncture, because uncertainty is prevailing in the system. So there are two sectors which almost defied the trend for last 3 days, like IT and tech. What do you have to say about these movements in these sectors? Because these sectors are majorly promising sectors, not only for the Indian economy but for the other various economies, because IT moved on the development in the global marketplace. Like if some conflict is there or some geopolitical development is there, then the IT stocks are majorly impacted positively or negatively.
So IT stocks are severely impacted during the downturn and during the start of the Russia-Ukraine conflict. But now, as the talks are moving forward with a positive mood, so that's why IT stocks recovered significantly from the lows, because that was a great buying opportunity for the IT stocks. Another factor is that foreign institutional investors which have already sold out around 1 lakh crore rupees worth of equities. Do you see those funds coming back to the Indian markets anytime soon? Yes, this is very good question. They always buy on lows because they have good hold in the market and they can shape the market also. So in the volatile times, in the conflict times, or in the problematic times, they sell their equities or they sell in the derivatives also, and from those they recover once again and make good profits. So I believe markets are strong. Fundamentals are strong, Indian economy is strong, and our growth rates are strong. So there is no any worrying factor for the market considering the fundamentals of the Indian economy. But if some conflict or some geopolitical development is taking place, then it impacts the market significantly because of the selling by the FIIs, and they buy on the lows once again. So that is the dynamic of the market, and I believe for the long-term investors, this is a great opportunity at the lows to buy for the long-term equities. But they should not enter in the volatility to make profits in the shorter term. डॉक्टर शर्मा, हम आपका ध्यान आज के कारोबार की ओर ले चलना चाहेंगे, और आज के कारोबार में सभी क्षेत्रों में अच्छी खासी बढ़त हम देख रहे हैं। खास तौर से एफएमसीजी में 2.7% की बढ़त हुई है। इसे हम क्या, जो राज्यों के परिणाम आए हैं, एक स्थिर सरकार की कह लें कि संभावना बनी है, उससे ग्रामीण भारत में जो खरीदारी का स्तर बढ़ता नजर आएगा या बढ़ सकेगा, यह उसको रिफ्लेक्ट करता है या कोई दूसरे और भी कारक लग रहे हैं आपको? देखिए, क्या है मनोज जी, जब जो सत्ताधारी पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी है सेंटर में, अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी सेम पार्टी की होती है, तो थोड़ा सा एक पॉलिसी एनवायरनमेंट बहुत ही आपस में कंड्यूसिव रहता है, जिससे कि जो कंजम्पशन डिमांड है बहुत इंक्रीज होती है, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो काफी इंक्रीज होता है, सेंटर का भी और स्टेट्स का भी। तो अभी जैसे जिस तरीके से जो स्ट्रांग, मतलब मैं इसको कहूंगा कि स्ट्रांग पार्टी, मतलब एक कंटिन्यूस जो पॉलिसी प्रोसेस है वो कंटिन्यूशन में रहता है। जो एक सरकार ने पॉलिसी बनाई है, आने वाले 5 साल में अगर वो सरकार फिर रिपीट होती है तो अपना पॉलिसी एनवायरनमेंट कंटिन्यू रखती है। तो उसी के मद्देनजर जैसे अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि डिमांड को रिजुविनेट करना, डिमांड के वीक होने की वजह से जो सरकार है काफी प्रयत्न कर रही है, और उसमें एक पॉलिसी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है कि आपको पता है कि लोगों को किस तरीके का रिस्पाइट देना है, किस तरीके की उनको फैसिलिटेशन देनी है। तो एक सरकार ने जो सोचा होता है उसको आगे वो कंटिन्यू करती है। तो उसी की वजह से जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं, जो ग्रोथ है, वो कंटिन्यू रहेंगी जहां जहां पे भी जो रूलिंग पार्टी है वो रिपीट हुई है। और ये भी नहीं है, जो नई सरकार आती है, जो अगर रूलिंग पार्टी नहीं भी आती, दूसरी सरकार भी आ जाती है, तो वो भी नई नई चीजें, उनका भी एक ये सिद्ध करने का होता है कि हम ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करेंगे। तो एकदम से जो इकोनॉमी में, स्टेट इकोनॉमी में एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है और काफी एक्सपेंडिचर भी होता है। तो उसी के मद्देनजर जब आज के रिजल्ट हैं, उनको मार्केट में खासकर जो कंजम्पशन सेक्टर है, एफएमसीजी है, उसको बहुत पॉजिटिवली लिया है कि जो एक्सपेंडिचर साइड है दैट विल कंटिन्यू, और उससे बहुत अच्छा जो आगे कारोबार होगा इन कंपनीज का, और डिमांड बढ़ेगी और स्टेट्स की डिमांड बढ़ेगी, और जो सेंटर है उसके साथ अच्छा ताल्लुकात रहेगा। श्रोताओं, यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ।
उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। Welcome back to the Market Mantra. We are discussing markets, stock markets, domestic stock markets to be precise. So, Sharma ji, I want to ask, the stock markets have gone down about 10% from its peak. The valuations have eased. Do you want to take your call on certain sectors which look promising to you? Yes, certainly promising sectors like IT sector, as we already discussed, is very, very promising sector of the Indian economy, and we are very good in the services sector, and we are providing so many services to the international market arena. And our companies, majorly the blue chip companies, are gaining on the back of various reforms undertaken by the government and the environment, emerging demand in the advanced economies and emerging and developing economies. And second, I would like to mention that infrastructure is very, very promising sector, as government has announced so many reforms for the sector during the last 5-6 years, particularly the national infrastructure pipeline and the Gati Shakti. So many projects are in pipeline and are going to take off in the coming months. That will provide a great opportunity for the infrastructure companies to move forward and to participate more and more in the growth trajectory of the Indian economy. So this is, I believe this sector is not promising for the months or years or the decades. It will go a long way to develop India's growth story and to make India a leading economy in the world economic system in the next 3-4 decades. So IT stocks and infrastructure stocks are major pillars of the economy, and other sectors like at this juncture, because crude prices are going up and these stocks related to the crude are also moving up, and this is also for the shorter period. This will also a good opportunity for the energy sector. But though that will depend on the price cost margins of the producers in the coming times, if crude remains high, then that can impact the price cost margins, and companies can see some selling. In the third sector, like you already mentioned, FMCG, as India is growing and demand is emerging in these states, and we have to provide so many developmental activities to the states, and all these developmental activities in terms of expenditure will reflect in the demand trajectory, and expenditure will move on such sectors, and FMCG and the related companies gain from such development. So this is also very, very promising sector. And I would say that manufacturing, particularly the textile, which is also a very promising sector since the last many years, many decades. So going forward now, the government is also very keen to promote this sector to the next level, and reforms. In every budget there are new announcements. So moving ahead, I would say that this sector will also move up with the growth in the coming times. My next question is related with India's GDP growth in the next fiscal. CRISIL has come out with latest, it has in fact reiterated its 7.8% GDP growth in 2022-23 financial year. Do you agree with the figures that this is likely to be 7.8%? Because after what happened in Ukraine, and it is continuing this geopolitical thing, do you think it is still feasible to predict 7.8% of growth? Yes, I still and I am confident that we will be able to achieve this growth trajectory for 22 and 23 to be higher, and because we have lot of reforms and we have lot of developmental activities at the ground level, like the states are now moving ahead with the more and more developmental activities. So
there were major reforms because of the elections, but all these expenditure parameters will reflect in the growth numbers in the coming times, in the coming quarters. This 7.8% growth is very, very promising because Ukraine-Russia war will not impact Indian economy in that much scenario because we don't have any significant trade with both of the economies, and they are the meager trade partners in the overall trade trajectory. But yes, because we can't ignore the contingent impact, there will be some impact on some sectors, like we are facing heat in the crude oil, and we will face the high inflation also reflected through the fuel prices. So that can impact the price cost margins of the producers in the manufacturing sector. But definitely, government is going to provide some relief to the inflation in terms of cutting the excise duties to make it promising for the manufacturers that they are not impacted by the high prices. That is the expectation from the by the industry, that there must be some restructuring in the custom duties to provide a relief to the manufacturers. But I believe reforms will reflect in the coming times, and that reflection is awaited because during the Corona period, government took so many reforms which are yet to reflect in the GDP numbers in the coming times with the lagged effect. डॉक्टर शर्मा, हम आपका ध्यान रुपए की ओर ले चलना चाहेंगे। रुपया 26 पैसे मजबूत हुआ है डॉलर की तुलना में और 76 रुपए 31 पैसे के स्तर पर पहुंचा। जो भूज राजनीतिक स्थितियां चल रही हैं उसमें उसके अलावा कह लें कि लगातार जो संस्थागत पोर्टफोलियो निवेशक हैं विदेशी, वो लगातार बिकवाल बने रहे हैं हमारे बाजार में, तो उसमें रुपया कहाँ जाता, किस दिशा में दिख रहा आपको? देखिए, जो रूपी में एक ड्रास्टिक फॉल आया था, जो हमने पीछे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जब शुरू हुआ उसी टाइम पे देखा कि रूपी में काफी फॉल है, तो जिसका कारण था कि आने वाले टाइम में टोटली अनसर्टेनिटी थी कि क्रूड प्राइसेस कहीं पे भी जा सकते हैं, और जो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है वो काफी लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। लेकिन अभी जैसे पॉजिटिव टॉक शुरू हुई है कि शायद कुछ सोल्यूशन निकले, कुछ रिस्पाइट मिलेगा, और क्रूड प्राइसेस भी थोड़े थमे हैं, और मार्केट इनफ्लो भी बढ़ा है, कैपिटल इनफ्लो मार्केट्स में बढ़ा है, तो अभी सभी सारे फैक्टर मिलके रूपी को पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अगर ये फैक्टर्स कंटिन्यू रहे तो रूपी का जो सिनेरियो है वो समवेयर बिटवीन 73 to 74 के बीच में जाके कंसोलिडेट कर सकता है फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज लिवाली तेज रही है। तेल के मूल्यों में कल आई गिरावट का अनुकूल असर निवेशकों के बीच आज देखा गया। निवेशकों के बीच मुद्रास्फीति में तेज बढ़ोतरी की आशंका भी थोड़ी सी कम हो गई। इन सब खबरों के बीच जापान का निक्केई 225 सूचकांक आज 3.9% की शानदार बढ़त लेकर बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 2.2% की वृद्धि हुई। सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 1.4% लाभ में रहा। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हेंग सेंग दोनों सूचकांक 1.2% ऊपर उठकर बंद हुए। यूरोपीय जोन पर ध्यान दें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां बिकवाली चल रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 1.3% नीचे था। जर्मनी के डैक्स में 2.9% की गिरावट थी, जबकि फ्रांस का CAC 40 2.6% घाटे के साथ कारोबार कर रहा था। And US stocks surged yesterday, led by financial and tech shares. The three main US stocks rebounded from losses of several sessions as oil prices pulled back sharply after fanning inflationary fears. The S&P 500 posted its biggest one-day percentage gain since June 2020, while the Nasdaq tallied its biggest rise since March 2021. The Dow Jones Industrial Average Index climbed 2%, the S&P 500 surged 2.6%, and the Nasdaq Composite jumped 3.6%. डॉक्टर शर्मा, बहुत संक्षेप में विश्व अर्थव्यवस्था पर आपकी प्रतिक्रिया हम समझना चाहेंगे। उसके अलावा जो दोनों देशों के बीच में यूरोप में युद्ध चल रहा है, उसका कितना प्रतिगामी असर पड़ सकता है टोटल जीडीपी पर विश्व के?
जी जी बिल्कुल मनोज जी। जो मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना के टाइम पे बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन जो वर्ल्ड ने फेस की पिछले 2-2.5 साल में, उससे हम काफी रिकवर करना शुरू कर दिए थे, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स रिकवर कर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिकवरी से पहले ही जो रशिया और यूक्रेन में वॉर शुरू हो गई, तो इससे ये जाहिर है कि ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट आएगा और जो रिकवरी प्रोसेस थी वो भी इम्पैक्ट होगी। लेकिन जिस तरीके का स्टिमुलस दिया गया कोरोना पीरियड में, उसका भी अभी पूरे विश्व में लैग इफेक्ट जो आता है बाद में, जो ग्रोथ में रिफ्लेक्शन आती है, जो स्टिमुलस दिया होता है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती है, उनको टाइम लगता है आगे रिफ्लेक्ट होने में, तो उसके असर की वजह से ये जो अभी वॉर है इसको थोड़ा वो पॉजिटिवली इसके इफेक्ट को नलिफाई करेगा। और मैं समझता हूँ कि ग्रोथ के ऊपर, वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर कोई मेजर असर नहीं आएगा। अगर आएगा तो भी तो वो पॉइंट्स में 0.2 और 0.3% का कुछ इतना इम्पैक्ट आ सकता है ओवरऑल वर्ल्ड जीडीपी के ऊपर। And in the energy market, global crude oil prices today rose around 5%, following a sharp drop in the previous session, as the market contemplated whether major producers would boost supply to help plug the gap in output from Russia due to sanctions for its military operation in Ukraine. In intraday trade, Brent crude was trading around $116.90 per barrel, while US crude prices were at $113.50 per barrel. Where do you see oil prices going from here? Totally uncertainty, because if the conflict is not taking positive shape, then crude prices may go up significantly. But if the conflict is settled and both the countries are in the peace talk and they settle this conflict, then the crude prices will decline sharply, and the average crude price will be at around somewhere $90 per barrel. डॉक्टर शर्मा, हम सर्राफा बाजार पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे और आपकी सलाह भी समझना चाहेंगे। पहले हम श्रोताओं को लिए चलते हैं सर्राफा बाजार की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज अप्रैल अनुबंध वाला सोना अंतर्दिवसीय कारोबार में 500 रुपए उछलकर 53,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं मार्च अनुबंध वाली चांदी 725 रुपए बढ़त के साथ 70,300 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार में सोना $2,000 के स्तर को पार कर गया। $2,011.70 प्रति औंस के स्तर पर समाचार तैयार किए जाने तक इसका कारोबार चल रहा था। चांदी भी मजबूती के साथ $26.30 प्रति औंस पर पहुंच गई। डॉक्टर शर्मा, सोना एक और न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में 2000 से ऊपर पहुंच चुका है। घरेलू कारोबार में सोना कहां जाता दिख रहा और क्या स्थिति रहने वाली है सोने की? देखिए मनोज जी, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले जो 4-5 वर्ष हैं वो काफी ऐसे डायनामिक रहे हैं। पहले तो यूएस और चाइना में ट्रेड वॉर थी, उसके बाद फिर कोरोना आया, 2-2.5 साल उसने इम्पैक्ट किया। अभी ये रशिया और यूक्रेन वॉर, ये तीनों चीजें जो है काफी अनसर्टेनिटी जो क्रिएट करती हैं, तो जिसकी वजह से सोने के जो प्राइसेस हैं, अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट की बात करूं तो वो 45-40 हजार का एक बेस बन चुका है। चाहे वो इकोनॉमीज वापस कितनी रिकवर कर जाएं और जो जितनी भी मार्केट्स पॉजिटिव हों और सब कुछ सेटल भी हो जाए, तब भी सोने में ये बेस बन चुका है। इससे सोना गिरने के बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन अगर ये अनसर्टेनिटी जो अभी हम फेस कर रहे हैं और बढ़ती है, तो प्राइसेस के ऊपर जाने के बहुत ही ऐसे चांस है कि इसका कोई अभी अंदेशा नहीं है कि कहाँ पे रुक सकता है। कि जैसे ही अनसर्टेनिटी या कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशन आती हैं तो सोने के भाव में बहुत तेजी आती है। तो उसके लिए जो इसमें आगे बहुत तेजी से बढ़ने की आशा की जा सकती है अगर ये कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहता है। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जी शुक्रिया मनोज जी, थैंक यू सर। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks gain more than 1%. Sensex closes above 55,400 points. Nifty settles near 16,600. Rupee appreciates 26 paise against the US dollar. And Brent crude prices hover around $116 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaste. Market Mantra, Market Mantra.